Hello everyone, welcome to Achievers. In today's video, I'm going to start the next chapter, that is metals and non-metals of class 8 CBC classes. If you have not subscribed to this channel, subscribe it so that you can keep on watching such videos for the easy understanding of the basic concepts of science. And that will be a motivation for me as well. Thank you. Okay, let's begin with the positive thought, which says that we must accept finite disappointment but never lose infinite hope. That means you should not take the small failures by heart. You should keep on working, okay, as you can achieve anything which you wish for with your constant efforts. Okay, let's begin with the chapter. Okay, so when we talk about metals and non-metals, before that we have to understand that whatever things which we have around us, what they all are made up of. Okay, so when we talk about all the things which are around us, we say that they're all made up of matter. Now, what this matter is? So what is this matter? We say that matter is any substance which occupies some space and have some mass. ओके कि कोई भी चीज़ जिसमें कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट ऑल इज मैटर. सो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती है, सभी में कुछ न कुछ मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इवन द गैसेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स एट व्हाट दिस मैटर इज मेड अप ऑफ. Okay, so you have already studied that matter has solid, liquid and gaseous states. But what these all solid, liquid and gases are also made up of? So we say that these are made up of small particles. कि ये gases, solid, liquid सब किससे बने हैं? Small particles से बने हैं. And what are these small particles? These small particles are the atoms. Okay, what are the atoms? Atoms are the small particles from which this matter is made up of. Okay, and the atom, like we say in living systems, cell is the basic unit. Cell is the smallest unit of living organism which can function. Similarly, when we talk about non-living things around us, we say if I'll break take example of a pencil lid. If I'll break that pencil lid into the smallest part which I can break into, which will have the properties of that, I can break that into the smallest part, that is atom. So atom क्या है? किसी भी non living material का smallest part जिससे वो बना हुआ है. Okay, like take any example. आप कोई भी चीज़ हमारे आसपास ले लीजिए, चाहे आप पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, या कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट हम बता सकते हैं वो है एटम्स, जिससे वो मिलकर बना हुआ है अलग अलग टाइप के एटम से. फाइन. नाउ व्हाट दीज एटम्स आर? एटम्स क्या है बेसिकली? बिकॉज हमारे आसपास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है, सबका अलग अलग अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो ये एटम्स किसके होते हैं? ये एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. We have more than 100. Okay, so we were talking about elements. When we were talking about elements, we said that there are more than 100 elements. Most of them are natural and some are man-made. So what are these elements? What are elements? Is the simplest and purest form of any substance. किसी भी चीज़ के जो purest form होती है या simplest form होती है, that is called as element. And different elements are what? They are the different types of atoms. And उन्हीं atoms के मिलने से, एक टाइप के एटम के मिलने से या अलग अलग टाइप के एटम्स के मिलने से बनती हैं अलग अलग चीज़ें, which we call as compound, which we studied a little bit about in previous classes. So basic thing we are talking about is these elements, the atoms, and how can we study them. So when we talk about matter, we can basically divide the matter into pure substances and impure substances. Pure substances में आते हैं elements and compounds. Elements, because we said that this is the basic unit from which all the other things are made up of. चाहे हम compounds की बात करें, चाहे हम mixtures की बात करें, ये किससे बने होते हैं? ये first बने होते हैं different types of elements से. Elements क्या है? Elements are the basic form of matter. जैसे हम बात करते हैं, हम कहते हैं living organisms का basic unit है cell.
कि हमारा बॉडी, एनिमल्स का बॉडी, प्लांट का बॉडी, इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है सेल। सिमिलरली अगर हम मैटर की बात करें, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट और यूनिट होता है एलिमेंट, और एलिमेंट क्या होता है बेसिकली, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, इट इज बेसिकली हैविंग द एटम्स। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एलिमेंट की, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सारे हाइड्रोजन एटम्स की जो कि हमारे आसपास या नेचर में प्रेजेंट है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन एलिमेंट, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द ऑक्सीजन एटम्स। फाइन। Similarly, nitrogen, carbon, hydrogen, helium, different elements are there. As I said, there are more than 100 different types of elements are there. Fine. Now, the next thing we can talk about is that हमने बात किया कि एलिमेंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, मोर देन 100, ओके, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक सम मोर एलिमेंट्स, ओके, सो constantly we'll get to know about more and more elements. That okay, if I want to study about, or some scientists want to study about all the elements, then it will take so much of time and efforts and cumulative efforts from different scientists. तो हम इसको easy बनाने के लिए क्या किया गया है, scientists from the beginning, from the 18th, 19th century, 20th century, what they did, इन्होंने elements को study किया, then they shared their studies with each other, और साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन एलिमेंट्स को इजीली स्टडी करने के लिए उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ताकि उनकी जो अब किस बेसिस पे डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल लाइक यू हैव टेकन हियर, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू दीज 3 कैटेगरीज। अब ये कैटेगरीज क्या क्या है, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमने क्या किया, उन एलिमेंट्स को जिनका प्रॉपर्टीज मोर और लेस सिमिलर था, उनको एक कैटेगरी में रख दिया। फॉर एग्जांपल ऐसी चीजें जिनमें शाइन होती है, जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जो कि मोस्टली सॉलिड्स होती है रूम टेम्परेचर पर, ऐसी चीजों को हमने रखा मेटल्स में, ओके। सेकेंड थिंग्स जो कि मोस्टली लिक्विड है या गैशियस स्टेट में है, नेचर के अंदर है रूम टेम्परेचर, उनको हमने रखा नॉन मेटल्स में। फाइन। और कुछ ऐसी चीजें हमने देखी जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की है, तो हमने उनको रख दिया बीच वाली कैटेगरी में, दैट इज कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। Fine. So we have 3 categories which the elements are divided into, और हमने इनको एक डिवाइड क्यों किया है, for the easy understanding of their basic properties, कि हम उनको आसानी से स्टडी कर सके, इसलिए हमने इनको कुछ सिमिलर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, करेक्ट। जैसे हम नॉर्मली बात करें तो there are so many varieties of neem tree also, there are so many different टाइप्स ऑफ डॉग्स ऑल्सो, बट हम जब स्टडी करना चाहते हैं डॉग को एज अ वन कैटेगरी, तो हम डॉग्स को एज अ होल स्टडी कर लेते हैं, या कैट्स एज अ होल स्टडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एलिमेंट्स को भी इसी तरह से कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ताकि हमको इजीली स्टडी कर सके। फाइन। एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट now you can ask that where these metals and non-metals are found in nature, कि बेसिकली मिलते कहाँ हैं, where will I find iron, where will I find silver, where will I find gold, and where will I find platinum? So when we talk about the occurrence of metals, that where these are found, so these metals are very reactive, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे कुछ लोगों को बहुत जल्दी फ्रेंड बनाने की आदत होती है ना, वो जहाँ भी जाते हैं जल्दी से फ्रेंड बनाते हैं, किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। सो मेटल्स का भी ऐसा ही नेचर है, ये जल्दी से रिएक्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ, और उनके साथ डिफरेंट कंपाउंड्स बना लेते हैं। सो दैट्स वाई मेटल्स आर नॉर्मली नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म। मेटल्स नॉर्मली फ्री नहीं मिलेंगे, कि आपने देखा कि चलो ये देखो, ये हमारे पास बहुत अच्छा सा मेटल का एक बड़ा सा बल्क मिल गया है, अर्थ को डिग किया और बड़ा सा पीस निकल गया, ऐसा नहीं होता है। व्हाट मेटल्स डू, मेटल्स फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बना लेगा, और उस फॉर्म में नेचर में मिलेगा। जैसे आयरन ऑक्साइड बना लिया, आयरन ऑक्साइड एक अर्थ के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां से हमें उसको निकाल कर प्यूरिफाई करके देन उसको यूज करना होगा। सो हाउ दे आर फाउंड एज, मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। जैसा मैंने कहा मेटल्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्ट करके कंबाइंड फॉर्म में उस एलिमेंट के साथ एक मिनरल बना लेते हैं, और उसी मिनरल फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, करेक्ट। Now the next what we can say that, now what are these minerals? These minerals are solid
inorganic. Now what is the meaning of solid? You all know what is solid, fine. What is inorganic? Any substance which is not organic, means which is not obtained from the living and non-living, living organisms, and which does not have more of a carbon thing, carbon in its compounds, then they are called as inorganic. Organic का basic जो यूज होता है वो कहाँ होता है? द थिंग्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो लिविंग थिंग्स से मिलने वाली चीजें होती है वो वहां पर हम यूज करते हैं वर्ड ऑर्गेनिक का. और इनऑर्गेनिक का मतलब है दैट मीन्स इट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाइन. तो मिनरल्स क्या है? ये सॉलिड है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनका एक डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला है. ओके, सो दैट इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड. फाइन, व्हेन वी डिग द अर्थ, हम उसको टेस्ट करते हैं लैब में साइंटिस्ट, एंड उससे पता चल जाता है कि अर्थ के जो हमने सैंपल लिया है इस एरिया से, उसमें कितना परसेंट आयरन है, कितना परसेंट एल्यूमिनियम है, कितना परसेंट कॉपर है, या किस एलिमेंट में का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है उस सैंपल में. तो जब हम डिफरेंट एरियाज को स्टडी करते हैं तो इसी तरह किया जाता है. नाउ दिस मेटल्स हैज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर मिनरल ओर्स. हम क्या करते हैं? हम अर्थ को डिग करते हैं. एज यू कैन सी हियर, हम अर्थ को जब कोई भी मेटल को हमें निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, इसको हम फर्स्ट करते हैं माइंस से डिग, उस मटेरियल को पहुंचाया जाता है लैब में, नॉट फर्स्ट इन स्मॉल सैंपल. लैब में भेजकर उसको स्टडी कर लिया जाता है कि क्या इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स है कि हम उस एरिया को डिग करके उसको निकालें. फाइन, इफ इट इज फाउंड कि हाँ उसमें अच्छा अमाउंट ऑफ आयरन है, या कॉपर है, या एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, देन व्हाट दे डू, दे डिग द होल एरिया. देन वहाँ पर फिर वहाँ फैक्ट्री सेटअप की जाती है. वहाँ पर फिर अलग अलग मेटल को डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से यूज करके उसको अलग किया जाता है. ओके, so metals are separated from their ores by physical and chemical processes. There are several chemical and physical processes are there which can be used to separate their metals. For example, you are aware that iron has the magnetic properties. तो iron को हम magnet को use करके आयरन को हम उसके ओर से सेपरेट कर सकते हैं. सो देयर आर सेवरल सच प्रोसेसेस जिससे अलग अलग मेटल को सेपरेट किया जाता है. फाइन, एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. Correct? Okay, moving on further, there are only few metals which exist in free state. ठीक है, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, these are not so reactive. ये इतना जल्दी घुल मिल नहीं जाते हैं. They are not so reactive. They don't react to form different compounds. So they are found in free state, जहाँ पर आपको free state में वो मिल जाते हैं नेचर में. So these are only few. Now next, let's talk about the occurrence of non-metals. ऐसे substances जो metals नहीं हैं. Fine. The simple one, the common example we can take is, as we said, metals are very reactive. So non-metals are the ones which are not so reactive. They are found, and second, metals being reactive are found in combined state. Non-metals are found in free state. जैसे hydrogen gas is there, hydrogen, carbon, oxygen, sulfur. These are some of the non-metals which we have in around us, and we discuss about them, we use them. Like carbon is there in carbon dioxide, carbon monoxide, oxygen we inhale, hydrogen gas is also around us, hydrogen is also a part of water compound. Fine. And this carbon, you can see you may have different things around us which are made up of carbon, like the graphite, the diamond. These are the purest form of these elements. You are aware that diamond is the purest form of carbon. That means diamond किसका बना है? Completely carbon atoms का बना हुआ है. Fine. So this is about non-metal. Like if we talk about the hydrogen, this is the third most abundant non-metal after oxygen and silicon. Oxygen, if we talk about, oxygen is the most abundant non-metal in the earth crust. Earth crust में oxygen बहुत abundant है. कैसे है? As oxides. ऑक्सीजन डिफरेंट चीजों के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, कार्बोनेट्स बना लेता है, सिलिकेट्स बना लेता है, एंड ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दैट यू आर अवेयर. फाइन. द नेक्स्ट कॉमन नॉन मेटल इज द कार्बन, एज आई डिस्कस. एंड कार्बन कैसे मिल रहा है? एज अ डायमंड, एज अ ग्रेफाइट. दीज बोथ आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, and there is only slight difference in the diamond and graphite. Go and search more about it. Okay, there's one question which I'm giving to you today.
Okay, you will write in the comment box when I said that all around us we have matter. Now what is around us which is not matter? Write the answer in the comment box. And if you want to know more about the properties of metals and non-metals, we are going to continue in the next video. So wait for the next video. Thanks for watching today. If you enjoyed these videos, subscribe to this channel and share it with your friends. Thank you. Take care.